His dad was in police, mom homemaker, two elder sisters. Both are good in studies, so you'll have to be good in studies because same school. They are elder. वो टीचर आएगा आएंगे बोलेंगे अरे तुम्हारी दीदी तो इतनी अच्छी थी तुम क्या कर रहे हो टीचर आस्क्ड क्या बनना चाहते हैं सब लाइक डॉक्टर बनेंगे आई सेड सच्ची में आई सेड मैं अच्छा इंसान आई विल बी अ गुड पर्सन How did you go from engineering to journalism to MBA to painting? हाँ so, so engineering good thing nice and I did good मतलब not bad you can check वो degrees and all everything is there सब कुछ है अच्छे नंबरों से पास होने वाला लड़का क्या बोलते हैं शर्मा जी किसका गुप्ता जी का लड़का वो मैं ही हूँ शायद serious question kept coming can you do it forever it wasn't that कि एक बार में हो गया I got frustrated नहीं हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है and that was not the only thing that I was trying to do more what if this fails I should start writing as well थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा कुछ और कर लेते हैं what are you good at अंदर तो वो चलते रहता है ना कि ओ व्हाट नेक्स्ट क्या करूं मैं I never thought about it I'm not from art background experimented perfected it and this is what you see In this episode of Origin Stories, meet Abhishek Deheriya, a full-time painter. He studied engineering from Nagpur, journalism from IIMC-Delhi, and MBA from FMS, which takes only 1 out of 10,000 applicants, only to give it all up and build his career in something he can do forever. अभी भी यार होता है लोगों को कंफ्यूजन होता है पीपल एंटर समथिंग लाइक कि नहीं हुआ आई एम नॉट सेइंग कि मैं पैशन में हाँ पैशन आई एम फॉलोइंग पैशन दिस इज नॉट पैशन दिस इज कैलकुलेटेड the whole thing was calculated because I was earning, say there is a salary, the X is the salary. If I started earning X plus something, that was the time to quit the job, not before that. Yes, it is difficult to manage emotions and decisions simultaneously, but Abhishek learned it very early. Tell us something about your childhood. How was it? Childhood, मैं बहुत पीछे जाऊँ मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ you know that ना very old. Childhood, I mean I'm from Siuni, Madhya Pradesh. Siuni, Madhya Pradesh, as in, you might have heard the Siuni name in Jungle Book, the jungles of Siuni. So वहाँ से हूँ. And it's a very small town, very tiny town. And this goes back 90s में 80s की पैदाइश तो जब तक बड़े होते हैं and we know कि we get some senses out and we're like in fifth or sixth and everyone is like doing random stuff very random as in playing गाली देना पान गुटखा चबाना that time it was all legal and all गुटखा चबाना like what is happening what is everyone doing मूवी देखना like I like movies but not चाय सुट्टा वो सब बिल्कुल नहीं never so that was like a stop कि okay do something else you watch movies you see things but then or you do things so there was some water bodies so I has to go to the water bodies चले गए साइकिल उठाए चले गए खुद बैठ के कर रहे हैं देन स्टडीज तो यू हैव टू स्टडी सो पढ़ाई कर रहे हैं एंड देन और भी चीज़ें कर रहे हैं बट नेवर गॉट इन्फ्लुएंस्ड एनीथिंग नेवर हैड लाइक वो तंबाकू वंबाकू नेवर पास भी नहीं है like, कभी नहीं तो इन्फ्लुएंसेस एंड राइचियस वाला एक because dad was in police mom homemaker two elder sisters both are good in studies so you'll have to be good in studies because same school they are elder वो टीचर आएगा आएंगे बोलेंगे अरे तुम्हारी दीदी तो इतनी अच्छी थी तुम क्या कर रहे हो like, यार ऐसा तो नहीं हो सकता तो पीयर प्रेशर भी नहीं है सिबलिंग प्रेशर आता है एंड देन ऑब्वियसली हेल्प इन स्टडीज एंड ऑल प्लस डैड इन पुलिस but no money very rare combination no money at all why because papa was
जीरो मनी किसी से, भयंकर वाले ऑनेस्ट। एंड आज भी उनकी परवरिश, मम्मी का जो भी ज्ञान जो भी दिया उन्होंने, आज भी अगर से पैसे पड़े मिल जाएंगे, आई डोंट वांट टू पिक दैट पैसा अप, आई वुड गिव इट टू समवन एल्स। मुझे लगता कुछ हो जाएगा, नॉट जोकिंग, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम अदर्स एज वेल। लाइक अभी कुछ 700 रुपया मिल गए थे हमको रोड में, एंड देन वी पिक्ड इट अप एंड केप्ट इट विद अस so that we can give it to someone, and then we gave it to a person, चने बेचने वाला है, उसके फेस में स्माइल देखना था, क्या मिल गया, 700 रुपया है, उसके लिए कितना बड़ा है, बट जो मेरी चीज़ नहीं है वो नहीं है, तो वो दैट इज ऑल दीज एनेक्डोट्स फॉर, दैट इज दैट केम कि ये नहीं करना है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें नहीं करना है, बट कुछ चीज़ें करना है, करते जाना है, पढ़ाई करना है, ठीक से इंसान होना है। तो फोर्थ में मैं प्रोफेसर टीचर, नहीं टीचर आस्ट क्या बनना चाहते हैं सब, एक डॉक्टर बनेंगे, मैं आई सेड, सच्ची में आई सेड मैं अच्छा इंसान, आई विल बी अ गुड पर्सन, ठीक है, पर बनना क्या चाहते हो, आई विल बी अ गुड पर्सन, अंदर से आ रहा है, कोई नहीं सिखा रहा, कुछ नहीं, बट सी वही इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स की दे गेट इनसाइड कि हाउ डू यू, मतलब सब हिंदी बोल रहे हैं, हाउ वुड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, कुछ तो हो रहा है, हाउ वुड यू पिक अप लैंग्वेजेस, हाउ वुड यू पिक अप थिंग्स विच आर राइट, वुड यू डिफरेंशिएट, वो बैलेंस कहाँ से आएगा, एंड आई थिंक फैमिली वाला इन्फ्लुएंस वेरी है, बिकॉज स्मॉल टाउन, ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, अरे भी, तो इट वॉज, फिर पढ़ाई तो ज़रूरी है, बिकॉज दीदी पढ़ रही हैं, बड़ी दीदी भी पढ़ रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, बट अच्छी चीज़ ये होती थी उनकी साइकिल मेरे को मिल जाती थी, उनकी जो भी स्कूटी स्कूटी थी मिल जाती थी, बट देन दोज वर द इन्फ्लुएंस। एंड नेक्स्ट थिंग, अब दीदी इंजीनियरिंग, तो अब क्या करोगे, इंजीनियरिंग, हाँ हाँ, अच्छे से किया, जोर के किया, आई मीन बनता है, और क्या करोगे, गवर्नमेंट करो, हाँ, so engineering, good thing, nice, and I did good, मतलब not bad, you can check वो degrees and all, everything is there, सब कुछ है, अच्छे नंबरों से पास होने वाला लड़का, क्या बोलते हैं शर्मा जी, किसका, गुप्ता जी का लड़का, वो मैं ही हूँ शायद। नहीं, पढ़ना जरूरी है, बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन यार, ये बार बार बोलना नहीं चाहिए, बट नो मनी, सो यू नीड टू हैव दैट कि यार यू विल डू समथिंग विच विल गेट मनी, ठीक है, डन, स्टडी वेल, देन देन जॉब, देन कुछ तो करना होगा, you do something after that, but then doing that, suddenly a question kept coming, and which is a serious question, I'm not denying it, serious question kept coming, can you do it forever, मतलब can I do it forever, sir, at times came, no 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 no, I can't, so IMC came through, like after engineering 2004, 3 years of something, doing things, learning things, doing some bit of trading, ये वो कर करके, then suddenly realize नहीं यार, do something more, then realize कि हाँ, you are creative, I'm creative, so उस समय advertisement and all वो भी था, but then I cleared EJ and RTV as well, interviews as well, but went to advertising because creative field, did good, फिर कहाँ है, इकोनॉमिक टाइम, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पैसा नहीं है शुरू में, पैसा कहाँ है, तो वहाँ पैसा है, चले जाओ, क्योंकि ज़रूरी है यार, एट दी एंड होना होगा, कुछ तो होना होगा, तो टू इकोनॉमिक टाइम्स, बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट आई गैदर्ड वही 4 5 6 जो प्री IMC टाइम पे, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, थिंग्स, पॉलिटिक्स और ये और वो, तो ईटी में क्रैक, ईटी आराम से, हाँ, इनसाइड यू आर वर्किंग इन ईटी, एंड then again, and it was good, the job was good, things were happening, again that question arrived, can you do it forever, can't you do something more,
किया दीदी कि नहीं ठीक है, कैन डू, यू आर वेरी systematic as well, because I am systematic. I'm like not whimsical, not ye wo. I suddenly won't do something and very systematic. You can crack, enter MBA. I can, क्या करना होगा, बोले, ये करना होगा, ठीक है, I'll do it. कैट देना होगा, ठीक है। FMS का भी होता है, बोला FMS तो पास में है, I'll crack FMS. Very targeted, because Delhi, and FMS is in Delhi, so very targeted approach. I'll crack FMS. I cracked FMS. Went inside, did 99 point something. क्रैकिंग इज इम्पॉर्टेंट ना, करना जरूरी है। मतलब परसेंटाइल होता है ना, वो तो परसेंट तो पता नहीं क्या होगा, कितने नंबर आए, बट परसेंटाइल में तो अच्छा है। तो ऑब्वियसली जो कर रहा है वो तो कर रहा है ना, तो मतलब घुस रहा है वो तो सब बराबर के लोग हैं। आईएमसी में भी कि whoever enters are equally mad. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इक्वली मैड होते हैं, थोड़े कम होते हैं तो वो आरटीवी और ईजे और उसमें चले जाते, थोड़े ज़्यादा होते हैं तो थोड़े और ज़्यादा होते हैं, तो पीआर में और ज़्यादा होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में। दैट्स दी बॉटम कि यही है, सबसे पागल यही है। तो स्टिल देन एफएमएस तो entered FMS, and trust me, सबकी attendance if you follow that 100%, almost 100%, 99 point something होगा, because that was important at that moment, fully focused, ये तो करना ही है, but because that is you'll have to do that, complete it अच्छे से, and then FMS, and then because it comes naturally, कंपनीज का वो थ्री इडियट्स में आती है ना, कंपनीज इतनी कंपनीज आएंगी और आपको लेके जाएंगी, तो वो आ गई और ले गई हमको बैंक में मार्केटिंग में आई गॉट कंफ्यूज कि ये तो पैसा ही नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन नहीं, डू समथिंग एल्स। क्या समथिंग एल्स? इंटरनेट बैंकिंग, यू नो हु एम आई, मैकेनिकल इंजीनियर विद IIMC की डिग्री, एंड yeah, but you can do it. Like, yeah, I can do it. I'm not saying I can't do it. So I did, and I did well. Yes, then it's a merger हुआ, ING got merged to with Kota, कुछ merger में. But at the same time, I think I overstretched the answer to something else. बचपन से बहुत आगे निकल गए, दिस इज लाइक बुढ़ापा आ गया मेरा तो नहीं, बट देन मर्जर हुआ, कोटक ING got merged, just का important part, and then started did things, but then finally the answer came, you cannot do it forever, like नहीं ये तो नहीं कर पाऊंगा, क्या क्या है मतलब, if I'm not there someone else will be there, totally completely replaceable. I mean, the name Abhishek Deheriya, banking, वो भी वही करे, 19-20 होगा, 21 होगा, who knows, better, worse. But when the driving logic is, can you do it forever? Inside, yeah, it always runs. Very odd logic, I don't know, मतलब, have you heard about it? I don't know. Yeah, I've heard about it. You need to think about long term and stay in the long term game for with long term people. हाँ, बट सी वही पता नहीं चलता ना कि हाउ वुड यू नो कि अनलेस अनटिल, अभी के अभी भी यार होता है, लोगों का कंफ्यूजन होता है, पीपल एंटर समथिंग लाइक कि नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पैशन में, हाँ पैशन, आई एम फॉलोइंग पैशन, दिस इज नॉट पैशन, दिस इज कैलकुलेटेड, the whole thing was calculated, because I was earning, say there is a salary, say X is the salary, if I started earning X plus something, that was the time to quit the job, not before that. It was not कि यार X नहीं है बट C मिल रहा है, मेरे को पैसा आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, no. So yeah, the point is, well, there is Friday till Friday, Monday to Friday there is a job, and post that what do people do? प्लान कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, पास में है, बैंगलोर से तो बहुत अच्छा है, यहाँ से इधर निकल जाओ, नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, गोवा चले जाओ, गोकर्णा चले जाओ, ऑल दोस प्लेसेस, पौंडी चले जाओ,
traveling. I was like, yeah, I did that. Obviously, I won't say कि नहीं नहीं मैं नहीं घूमूंगा मैं नहीं घूमता. I like traveling and doing things. The thing is, then suddenly I realized क्या कर रहे हो यार? What are you doing? क्या कर रहे हो यार? मतलब वो वाला आ जाता है कि क्या कर रहे हो यार? And people are like कि चलो चलो यहाँ चलते हैं. नहीं मेरे को काम करना है. Like we are taking you to Wayanad. मतलब I can very anecdote. I remember my own incident. We are taking you in our car. You just have to sit and go to Wayanad. The hotel bill will segregate. You don't have to pay यार. Doesn't matter. चलो हमारे साथ. Like नहीं मेरे को हट बनाना है. And that was the time when 2014, 13, 14, I was trying to do things, create things. And no Instagram, nothing, no YouTube, no nothing. लाइक कि okay, क्या अच्छा लगता है अंदर से ही ढूंढ रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सो आई हैड दैट टाइम आई हैड 1 BHK हाउस ले रह रहे हैं 1 BHK हाउस तो 1 BHK में क्या करते हैं एक साइड गद्दा लगाते हैं एक रूम में थोड़ा टीवी भी रख लेते हैं कहीं कंप्यूटर आई रिमूव्ड एवरीथिंग इवन रोल्ड द दैट वो मैट्रेस आल्सो एवरीथिंग वाज आर्ट का प्लेस लाइक नथिंग सो व्हेनेवर आई गॉट कि थोड़ा सा हटा दो वहाँ सो जाओ पेंट्स वेंट्स रखे हैं ऑफिस जाओ ऑफिस के बाद आके शाम में खाना खाओ और फिर काम करो 2-2 बजे तक एंड इट वॉजन दैट कि एक बार में हो गया आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है एंड दैट वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट आई वॉज ट्राइंग टू डू मोर वट इफ दिस फेल्स आई शुड स्टार्ट राइटिंग एज वेल थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा कुछ और कर लेते हैं वट आर यू गुड एट ये सब करके like now I realized that this is where I'm going to be. This is what I'm going to be. Knife and brush? Mostly knife plus, I mean, I'm hands-on with tools and I create tools and grind them and make my own tools, which is, I mean, obviously you get good quality pellet knives and all that, but create your own tools, find your tools, make your own tools. I don't discuss. No one sees them. I mean, classes as we रहता है नहीं brush है pellet knife है but I mean and then use everything combined. Different mediums. Yeah. कभी कभी ये भी करना चाहिए that is mixed media that I do not do at all. I hate mixed media. But where is the purity in art if you use newspaper as newspaper? I mean, perfect one thing and then तो कुछ भी पेस्ट कर दो ना कपड़ा है साड़ी कट कर दो कितना अच्छा प्रिंट लगेगा you cannot call it art. Maybe it's something my own definition of art. So this thing I like. I don't want to go away from house or home to another place to work and come back. Like it's happening. Work is happening. I'll wake up at 6 o'clock, 5 o'clock, or work till say 3 a.m. But no, ठीक है घर में ही हैं ठीक है आ जाना whenever you're ready आ जाओ सो जाओ. So this setup suits. नहीं डिसिप्लिन एज इन डेली एक होता है ना मोटिवेशन होना चाहिए सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए अदरवाइज हु इज पुशिंग यू टू बिक जाएगा ना यार हु इज पुशिंग यू टू मेक क्रिएट न्यू थिंग्स डिसिप्लिन इज योर मोटिवेशन डेली का रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज यूल क्रिएट समथिंग एंड देन हो गया ना बैठो इट डजंट हैपन लाइक दिस daily day in day out you have to create things which are commissioned to you and those are like parallel एक अलग ही set a lot of photos you don't see but those are commissions you won't see this is a commission I won't see ठीक है दिख रहा है but then there is your own work in both उसका timeline होता है यहाँ पे you have to create a few for in say 3-4 months to have a lot and then suddenly one day like gone like there is nothing inside the gallery so everything is gone almost everything is gone so what do and you can start doing things वही है overdo ना हो जाए there is another वो you keep working and it's tiring I won't say कि other works are not other things are because you drive you go to the office you're like
कमर तोड़ रहे हो और काम कर रहे हो, physical labor, everything is tiring. This is also tiring, but the hours are not limited. You have to create well. Your mind is working, your hands, obviously hands, and you're moving things around. And this is not something कि you just created like ऐसे कर दिए पोत दिए and abstract कुछ निकल के आ गया. This is all planned and everything is planned. Do you want to master one art form or create a variety? I mean, there are painters who are doing the same style for like 10, 15, 20 years. They've become big. I never thought about it. I'm not from art background. I'm like, this is what I'm creating, my own style. I've experimented on it. I've, what do you say, perfected it. And this is what you see. At the same time, I'll be working on the other styles as well, on other styles as well. Like something else. What next? You don't experiment, यार वही करते करते कितना करोगे? I have to keep on growing, finding that final thing कि यार at the end I created this. Then it's always कि I am creating this. Then good. Oh, this is so nice. Then what next? अंदर तो वो चलते रहता ना कि oh what next? क्या करूँ मैं? Can I do it? Should I do it? What should I do now? Otherwise, एक एक line of business से, if commercially you take it, say a line of business, say watercolor. What I do watercolor portraits, I can live आराम से. Why do I do say acrylic or portraits in acrylic? I want to do it. I can do it. Who else will do it? And abstracts are very tough. I mean, and before this gets over, maybe someone picks it up, and because it happens, I create marlin and then they get sold, and then again a different sort of marlin with different style. Last 2 years I have like changed that style thrice. My own style, but evolved it thrice. How did you deal with failures? Scientific process or any process requires failures. अब अगर साइंटिस्ट बैठ जाए कि नहीं बना एंड देन आई कांट डू दिस तो हो गया. So if we are doing something, you have to go till the very end, and you don't know what is the end. At the very end you won't know because there is no end. यहाँ पे तो अगर कोई दवाई बना रहा, मॉलिक्यूल बन गया, टेस्टिंग हो गई एंड बाहर निकाल दिया दवाई, दैट इज द एंड फॉर देम. थोड़ा उसको ट्वीक करते रहते हैं. हाउ वुड यू नो? इट्स ऑल सब्जेक्ट. समवन सेज कि अरे वाह नाइस, हो सकता है दिल रखने के लिए बोल दिए हो. आई रियलाइज दैट कि देयर इज एन आई फॉर गुड थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, और थिंग्स which people will appreciate, do appreciate. Art, maybe other things listening, because advertisement, again going back to that. So I was there, the I was there to see things कि क्या बना रहे हैं, but process has to be correct. And वो process निकालने में ही that experimentation goes. And I don't know, आजकल तो लोग like कुछ भी पेंट लाते हैं एंड बोलते हैं आई एम आर्टिस्ट. लाइक यार ग्राइंड से तो जाओ, लोग पढ़ रहे हैं 5-5 10 साल लगा रहे हैं. मैं कढ़ाई लेके थोड़ी बोलता हूँ आई एम शेफ. I'm not joking, not making, but there is a grind. I'm not saying ki. And I have seen grind, and I have hedged the grind as well, because I was inside the grind. ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओ सब हो गया, achieved everything, वो नहीं है. But that time there was hedging as well. तो जॉब था ना, कुछ और कर रहे थे ना, पैसा तो है ना. At the end तो वो भी है ना, घर चलाना है. You don't need that much, obviously. I realized later, but then first तो अरे आने तो यार. तो वो भी जरूरी है, और सेविंग्स है, वहाँ सेविंग्स हो रही है. एंड एवरीवन वाज लाइक कि अब घर खरीदना, कार खरीदना. नहीं, मेरे को नहीं खरीदना. मेरे को फिर देन सडनली मेरे को बड़ा घर चाहिए. तो आई डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टेप ऑन. मतलब ऐसे से चल कूद कूद के चलना पड़ रहा है. किचन के कैबिनेट्स के अंदर आर्ट का मटेरियल, मतलब नहीं, आई नीड बिगर प्लेस. थोड़ा बड़ा इंदिरा नगर में, आई गॉट दैट, यू केम टू दैट प्लेस, थोड़ा सा बिगर प्लेस. एंड since then, and then I got married,
Then obviously you had to take much bigger place. Then things were obviously stable, much more, because establishment होते होते दीदी हो ही रहा है काम तो वही है. It's work in progress. I don't know where is the end ना. There is no end. It's all subjective. How long have you been painting for, and for how much did you sell your first painting? First painting started quite around about like 14, 2013, 14. That time started. You can't figure out because you're experimenting, you're finding new ways to do things. You're getting irritated. नहीं हो रहा है, कैसे होगा? And then you suddenly realizing, अरे वाह, watercolor होता है, acrylic भी होने लगा, अरे वाह, good, 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 do keep on doing. But then वही बढ़ते जाता है ना, you get painting, you create painting, your art, and then it starts getting stacked because you don't know where to sell, how to sell. डाल दिए Facebook में डाल दिए. Then Instagram started working. I changed the phone and then ऐसा होता है, अरे वाह ये क्या है, अरे वाह बहुत अच्छा है. That ways that thing started. But then someone in the office realized कि oh you're doing good work. Some work. Asked कि can you make a portrait for my girlfriend? Yes, I can create. You'll get पैसा. कितना पैसा? 1,500 रुपया. 1,500. लाइक ये मेरे को देना होगा, तुम दोगे? लेकिन तो मैं दूंगा नहीं, मन ही मन सोच रहा हूँ अंदर ही अंदर, मैं दूं तुमको या तुम दोगे? वही बात ज्यादा नहीं बोलना है मेरे को. लाइक कि 1,500. हाँ इतना बड़ा बनाता हूँ, छोटा सा. हाँ मैं छोटा सा बना के दिया. फ्रेमिंग उससे ज़्यादा महंगी थी इसकी उस टाइम पे. देन कि हाँ अरे वाह. Then people started coming. अरे you can make portraits. मैं बोला, yeah I make portraits watercolor में. ना मैं 5,000. 5,000 में, हाँ 5,000. रेट वेट कुछ दिमाग में नहीं आता, क्या है क्या रेट वेट एवरीथिंग मैं बना दूंगा. तो तब चल रहा है, तो ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, दे रहे हैं, रोल कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं. Good, good, good. Acrylic. Suddenly someone asked, "Can you create this?" Yeah, I can create this. The pricing, like I don't know how to price. But again, go back. I priced it somehow, and then वो Instagram started. ज़्यादा नहीं है अभी भी. No one follows. I don't know why. No one follows. I don't care also because business is thriving without that. So yeah, then that picked up. You can do abstract. Well, yeah, I do create. Well, because experimentation is happening. वही चल रहा है. And portraits भी बन रही हैं. Experimentation सब में चल रहा है. How to create better and better and better. And do not copy. Do not copy other style because first rule वही positioning. You see such work, it is done by that signature. And if I'm copying it, दिमाग में तो लोगों को पता है. Everyone knows how to Pinterest का photo and find out who is the real artist. If you copy, you are like nothing. Which is the most expensive painting you've sold? So I got this order. I keep getting huge orders from now corporate, like corporate office. There are offices in Level Road where the whole office is done by me. Done by me as in the all the art, everything inside there. Building is mine. So individually, one painting, I think it went for 4 to 5 lakhs because it was a bundle thing, and somehow the calculation came to per piece around 4 lakh to 5 lakh, somewhere in between. On an average, 2.5 lakhs. That is the price that I'm getting now. When you started your side hustle as a painter, how was the volume like? And were you making X plus? First painting you sold, and then I never looked back. The volume was huge, as in daily, yeah, every 3 days you are delivering something. Now I deliver like once in 10 days.
but a huge lot now. But that time it was okay, portraits are coming, people are contacting you for portraits, then suddenly abstracts. Volumes were high. And that's why the range comes into picture. What is your aim now? अभी एम अब तो वो और आगे बढ़ना है एम इज तो हमेशा ऊपर एंड प्राइस आई डोंट थिंक प्राइस डिटरमाइंस द एम प्राइस कुड बी एनी कुछ भी हो सकता है अब तो यूरोप में सेम थिंग विच सेल्स फॉर से 2 लाख यहाँ पे यूरोप में आराम से यू कैन गेट गेन्स लाइक 6-7 lakhs इन यूरोप तो फ्रांस में जैसे स्मॉल वाटर कलर विच आर लेसर प्राइस सेम वाटर कलर यहाँ पे 20-30 thousand में होगा वो 90,000 में यूरोप में होगा और यूएस में होगा इट्स थोड़ा सा रिलेटिव देन वो तो हमेशा है अप बट प्राइस वही पैसा इज नेवर 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 थिंग आई लाइक मनी बट आई एम नॉट सेइंग कि ले जाओ यार बट देन that determines ki where you're reaching but then art should speak for Do you think itself. you're successful? Yeah. Take success. What is success? As in price wise, yeah. The COVID, there was nothing throughout the world. I was working at commissions. People were sitting at home and buying things. People were buying things. And I was shipping. I made a deal with DTDC for within India. DHL during COVID time, DHL for outside. Uh, What would you advise to artists who want to start their own venture in art? in India, Anywhere. तो it's too big. मतलब if you can do it, मतलब अंदर विश्वास दृढ़ निश्चय है मतलब that is होना चाहिए. Market is too big. मतलब I have realized within India, I can't say about Europe क्या होगा and things that are happening outside India. Within India, it's huge, 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 huge potential. But वही hedge कर लो थोड़ा सा. You have you can do something. जो रोगन बन सकते हो. But overnight तो नहीं बन जाओगे ना. जो रोगन took years and years to become what he is now. ये थोड़ी कोई 200 million का डील ले लेता है. मतलब but takes time. This is the grind period. वो you'll grind through it and then after that वो निकलेगा हीरा बन के. Abhishek started painting full time in 2014, and by 2020, the lockdown came, and a lot of things changed. But Abhishek kept a very positive attitude. He moved to Guwahati, got married during lockdown, and set up a beautiful studio and started a wonderful life. How was it, Abhishek? Guwahati studio, we do know the eye of the outsider phenomena. I mean, the person who goes from outside, they see new things. And we realize, यार नदी के पास घर तो मिलते होंगे रेंट में तो why can't we find a huge place where we can have our studio gallery and then stay there as well. We found that and that's why Guwahati studio. We stayed in 2 different places because during COVID we can run the work from anywhere. So it was right on the banks of Brahmaputra. The story of marriage is interesting story. सब कोविड मतलब सब बोलते हैं यार बहुत खराब गया मतलब बुरा भी लगता है हंसना भी नहीं चाहिए. आई मीन सीरियसली आई मीन दुनिया के लिए बुरा गया बट वी वर happy together and with Adi together is there a term together like all three of us and somehow it stayed even after COVID thing got over and we don't want to leave each other's company. 29th was the date. It got advanced to 28th because 29th onwards 28th 6 p.m. onwards there was second round of lockdown. So we had to finish our wedding ceremonies, pack things up, shift to another place. So while wedding was going on,
our stuff was being shifted from a different house. So obviously, I'm Yeah. from Bangalore. She was there that time in Guwahati. All the stuffs are going there. So from next day of our wedding, we started setting up our own house together. It was nice. लड़की के फादर ने पूछा नहीं कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेते हो? बोले, धड़कन का कितना कमा लेते हो? जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है। नहीं, एक दिन में उड़ाती है उतना तुम एक साल में कमा लेते हो। काश ऐसा होता। नो क्वेश्चंस एट ऑल। पापा मम्मी, व्हाई? बिकॉज लड़की मेरे से ज्यादा कमा लेती है। मेरे घर में भी किसी, नो नो क्वेश्चंस एट ऑल वन एंड समवेयर दे डू हैव फेथ। कुछ करते हो एंड वही कम्युनिटी का डिफरेंस भी, मतलब नो डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कि मैं दरार खुद डालो राज करो नहीं बोल रहा हूँ, बट देन मारवाड़ी कम्युनिटी दे डू इंटेंड टू रन, मतलब दे रन बिजनेसेस, दे नो रिस्क पार्ट, that's why they like कि you have decided you do good, मतलब all these are they look good, हाँ तो you're good, हाँ कर लोगे, करते हो, no nothing, क्या करते हो, क्या nothing, are you a good person, are you a fine person? Funny cheese, I've seen people, what they do is they think art is entertainment, or somehow they see art through lens. I don't know what they see through it. I mean, so अभी जैसे चित्र संते हुआ, so चित्र संते में everyone is coming and they are clicking pictures and making videos. I'm like, stay back, relax, see, देखो तो क्या हो रहा है, absorb it, कि अंदर internalize करो. It's not entertainment कि इसमें गाना सुनाई देगा, इसमें कुछ होगा. इमर्स तो नहीं होते हैं, जो जो लोग सीरियस होते हैं वो होते भी हैं, but otherwise like maximum 99% of like हो गया वो, दिस इज द हर जगह वो 30 सेकेंड वो टिकटॉक ही हो रहा है हर जगह. 30 सेकेंड बस कर लो, हो गया. मतलब what will you do with so many photos of anything? Like, sit back, relax and then देखो उसको ऑब्जर्व कर लो, एब्जॉर्ब भी कर लो, अप्रिशिएट कर लो. मत खरीदो यार कोई सब खरीदने लगे तो अमेजोन में बेचने लगेंगे, वो बात नहीं है.